आप देख रहे हैं खास पेशकश CNBC आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। हम यहां पर आपके लिए एक झलक लेकर आ रहे हैं यहां पर बसे हुए भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर्स की। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे एक एक्स गूगलर शिव नारायण अर्बन इंजन्स के जरिए दुनिया भर में स्मार्ट सिटीज डेवलप में मदद कर रहे हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं काल मेहता से। वैसे सोचिए, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद करते हैं नए दोस्त बनाने के लिए, पुराने दोस्तों से फिर रूबरू होने के लिए और अपने नेटवर्किंग कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर आपने अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, उसके लिए आप कहां जाएंगे? यही सोचकर काल मेहता ने शुरू की अपनी कंपनी एडकास्ट। काल मेहता ऐसे भारतीय है जो पिछले 20 साल से अमेरिका में बसे हैं। स्टार्टअप हब सिलिकॉन वैली में 3 बिजनेस आजमाने के बाद अब काल एडकास्ट बिजनेस वेंचर चला रहे हैं। एडकास्ट एक ऐसा पर्सनल लर्निंग नेटवर्क है जो स्किल सेट डेवलप करने के लिए दुनिया भर में मौजूद एजुकेशनल मटेरियल, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्राइजेस, इंस्ट्रक्टर्स से स्टूडेंट को ऑनलाइन जोड़ता है। एडकास्ट का ये प्लेटफॉर्म सोशल, मोबाइल और क्लाउड बेस्ड लर्निंग मुहैया करता है। One behavior that we see now in almost more than 2 billion people on the planet is that everybody is wired into this behavior of social media every day. So we are spending time on Facebook and Instagram and Twitter and all those social networks. But most of the content over there is really just socializing and entertainment. But we are not learning and we are not enriching and we are not gaining new skills. So the idea behind EdCast is to take that horizontal plumbing of a social network but add the content which is all about enriching yourself, learning from the experts, from the influencers, and then you're really learning peer to peer. एडकास्ट के पास फिलहाल हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर्स, टेक जैसे अलग-अलग सेक्टर के 15 चैनल्स हैं। एडकास्ट का प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। So any kind of skill sets that you want to learn, but we have initially started obviously in terms of specific topics. So we have about 15 channels. So when you go, any user goes to edcast.com, we have 15 channels on it, very much like your TV network, right? And those channels are like, there is architecture, there is health, there is education, there is technology, there is entrepreneurship. So all of this you can learn. Now we've also allowed another capability, which is you can create your own channel. So if you are an expert, like if you are an instructor or a teacher or maybe like a content owner, like the McGraw-Hills of the world, you could actually create your own channel and you can post content. एडकास्ट को SoftBank Capital, StarTex, Kapoor Capital, Menlo, न्यू स्कूल्स, कर्विन वेंचर्स जैसे दिग्गज निवेशों का साथ मिला है। काल का कहना है कि कंपनी को फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है और यही सिलिकॉन वैली में होने की सबसे बड़ी खासियत है। One of the great thing about being in Silicon Valley is that this is one unique place when investors do take a long-term view and they would support to fund you on a much bigger vision. And so the big vision is that we want to have 1 billion people engaged, and then some small percentage of people out of that billion who can afford to pay money, they will pay, but they subsidize the rest of the people. अमेरिका की एजुकेशन इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की है और ग्लोबली ये बाजार $5.5 ट्रिलियन बड़ा है। बढ़ते टेक इनोवेशन से अब इस मार्केट के ट्रेडिशनल स्कूल और कॉलेज धीरे-धीरे ऑनलाइन में तब्दील हो रहे हैं और यही मौका है एडकास्ट जैसे वेंचर को बड़ा बनाने का। So just like in the shopping industry, how things are going from brick and mortar to e-commerce, same thing in education, the whole education content and the skilling is going from brick and mortar to online. So you can imagine that over the time, 5%, 10%, 50% of that $1 trillion or $5.5 trillion will turn into online and mobile. And fundamentally, our bet is that since 2 billion people are already engaged in social networking, we would ride that wave. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन के साथ एडकास्ट करीब से जुड़ा है। इसके लिए स्किल अप इंडिया ORG की शुरुआत हुई है। कंपनी ने भारत के नामी इंस्टीट्यूट्स के साथ करार किया है। There's about 1 million people coming into the workforce every month in India. But unfortunately, what all the employers are telling us, even in India, that these people are not skilled.
Majority of them don't have, they have a employable age like 21 or 22, but they don't even have a college degree. And the people who do have a college degree, they don't have the skill set. So there is a massive requirement to skill this almost 500 million people. So we are working closely with a number of departments within the Indian government, and I've met with several of them, and National Skills Development Corporation is doing a fantastic work. डिजिटल इंडिया को पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर भारतीय मूल के कई टेक एक्सपर्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स कोड फॉर इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। ये डेवलपर्स की कम्युनिटी है जो भारत में सुधार लाने के इरादे से हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स के लिए ऐप डेवलप कर रहे हैं। So what Code for India allows to do is that, all these engineers on the ground, 20-something, 30-something kids, but they're empowered, they have talent, they build the apps for, like you have a road safety issue, you have some of our volunteer engineers, they build, you have the Clean Up India. So they built an app where every time you see trash, not being picked up by your municipality, or you have a pothole in the road, rather than complaining and whining and blaming the government, you become an active citizen, you take a picture of it, we timestamp it, we location stamp it, we automatically send it to whoever the concerned, municipality department person is. So this kind of apps, you don't have to wait. None of the for-profit companies are going to build it because there is no money there. Yeah. The government's not going to build it. They don't have the best tech people. So who's going to build it? So it's we, all of us has to become volunteers, become a part of an organization, come together and build it. ग्रास रूट लेवल पर ऐसे कई छोटे मोटे कैंपेन शुरू हो चुके हैं और इसमें डिजिटल इंडिया की कामयाबी का आगाज होते दिख रहा है। हर्षदा सावंत, कैलिफोर्निया। वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।